Hello everyone and welcome to my channel, that is RUPINDER'S online classes and courses, and today we are going to discuss a very important poem, that is Telephone Conversation, written by Wole Soyinka. Yes, ये poem बहुत सारे schools और colleges, universities के syllabus में prescribed है, and especially in BA this is included in their syllabus for second semester. So without any delay, let's jump into the topic and explore telephone conversation. So the poem is written by Wole Soyinka. And who is he? Let's first of all come to know about who is Wole Soyinka. So he is a Nigerian playwright, novelist, poet, essayist in the English language. So basically he's from Nigeria, but he writes in English and he's a playwright. ड्रामा लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, वो एक कवि हैं और essays लिखते हैं. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1986. तो एक Nobel laureate हैं, इनको Nobel Prize मिला था literature के लिए. He's known for his revolutionary ideas. Definitely, he's talking of freedom, he's talking of abolition of slavery, he's talking of rights of blacks. So he is famous for his all these revolutionary, unconventional ideas. And he has always stood against the wrong. तो अगर कुछ गलत है तो उसके against खड़े हुए हैं ये हमेशा ही. Through his poetry, he has become the voice of the voiceless. तो जिनकी आवाज, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास आवाज नहीं है, लेकिन जो बोल नहीं सकते, दुनिया के सामने अपनी बातें नहीं रख सकते, बहुत साइलेंट हैं, उनकी आवाज बनने का काम किया है वोल सोयंका ने. Now, what is there in the poem? Just let's have a look at it too. So, this poem is about, on the surface level, it seems that it is about a normal conversation between a landlady and the person who is seeking a house on rent. तो नॉर्मल लेवल पे अगर आप देखो तो टेलीफोन कन्वर्सेशन एक ऐसी पोएम है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं. एक तरफ एक लेडी है जिसको हाउस अपना रेंट पे देना है और दूसरी तरफ एक इंसान है, एक मेल है जिसको हाउस रेंट पे चाहिए, उसको किराए पे लेना है और लैंडलेडी को किराए पे देना है. तो बेसिकली सरफेस लेवल पे इन दो लोगों की कॉन्वर्सेशन है, बट on the deeper level it highlights the superiority complex of the white people and the inferiority complex they have against the black people. तो लेकिन डीपर लेवल पे अगर आप देखो तो इसमें मतलब क्या है इसका पोएम का, एक तरफ वाइट हैं जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरी तरफ ब्लैक्स हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, उनको छोटापन महसूस होता है वाइट्स के सामने. या आप ये कह लो कि कैसे वाइट अपने आप को बहुत बेहतर और ब्लैक्स को कितना नीचे, अपने से बहुत नीचे समझते हैं. It throws light on the disappointment of the blacks they experience as the other in the society. तो कैसे blacks को the other, दूसरा समझा जाता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पोएम कंसर्न रखती है और इस पोएम में काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे पे रोशनी डाली गई है. It also hints at the relationship between the colonized and the colonizer. कॉलोनाइज्ड जिनके ऊपर रूल होता है और कॉलोनाइजर जो रूल करते हैं किसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ बखूबी बयां किया गया है. द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन डील्स विद रेशियल बायसनेस. तो यहाँ पे क्या है, जात पात का जो लोग भेदभाव करते हैं उसको बहुत ही ब्राइट और क्लियर लाइट्स कलर्स में यहाँ दिखाया गया है. एंड कलर हेट्रेड, कैसे लोग रंग के नाम पे, कॉम्प्लेक्शन के नाम पे, स्किन टोन के नाम पे लोगों से नफरत करते हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये सारे भेदभाव करते हैं. दैट इज द अंडरलाइन इशू इन द पोएम. So as far as now the reference to the context is concerned, because generally students have this question in their
exams that explain the following lines with reference to the context. So आप वहाँ पे सिर्फ poet का नाम बता के या poem का नाम बता के ही ख़त्म नहीं कर सकते, आपको properly explain करना होता है. So how can you make your reference to the context impressive? और कैसे आप अच्छे marks ले सकते हो? So here is the solution for all your problems. So if you have to write how you would explain everything in reference to the context, so you would write these lines have been taken or culled from the poem Telephone Conversation written by a famous poet Wole Soyinka. In this poem, poet क्या बात कर रहा है, poem में क्या बात हो रही है, poet ने express किया है क्या, his heartfelt emotions, feelings, sentiments, ideas and experiences about the central issue or the subject. तो ये एक common सी line है जो आप लिख के अपना cover up कर सकते हैं. You can even enhance the word limit of your reference to the context. So the poem deals with a telephone conversation between a white landlady and a prospective black tenant. अभी नहीं बना है वो उसका किराएदार, prospective हो जो future में बन सकता है, would be kind of. It highlights the racial biasness and the color hatred of the landlady and the rage. So this word rage, it simply stands for rage. It stands for too much anger, and the rage that the tenant controls while talking to the lady. While talking to the lady, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को, अपने rage को control करता है. So this stands for anger, right? And how he controls his anger while talking to the lady is actually matter of concern. उसको बहुत गुस्सा आता है because she is directly pointing out at the skin tone of his. So उसको गुस्सा आता है कि कैसे ये मेरे से ऐसे मेरा कलर पूछ सकती है कि मैं कितना काला कितना गोरा हूँ. उसको गुस्सा आता but he controls it. So after writing reference to the context, the next thing is how to explain the lines. So let's jump into the next slide and see how everything has to be explained. So here are the lines. The price seemed reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. तो प्राइस बिल्कुल ठीक है, लोकेशन इंडिफरेंट है, प्राइम पोजीशन नहीं है, कोई बिल्कुल क्राउडेड पॉश एरिया में नहीं घर है, अलग जगह है, अलूफ, इनडिफरेंट मतलब जहाँ किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं है, ऐसी लोकेशन है उस हाउस की, अपार्टमेंट की जो रेंट पे लेना है इसने. द लैंडलेडी स्वोर, लैंडलेडी क्या कहती है कि शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस, वो कहीं दूर रहती है, यहाँ नहीं रहती. नथिंग रिमेन्ड, सब कुछ ठीक है, पोजीशन भी ठीक है, उसकी लोकेशन भी ठीक है और प्राइस भी सही है, अफोर्डेबल है, तो हो गया. इट शुड बी फाइनल इन द फर्स्ट गो. बट नथिंग रिमेन्ड, बट क्या, सेल्फ कन्फेशन, एक कन्फेशन, एक हल्फिया बयां, एक कन्फेस करना, एक एडमिशन अपने लेवल पे कि मैंने ये एडमिट किया है, मैं ये करता हूँ, तो वो रहता है. वो क्या है, मैडम आई वॉन्ड, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन. सो व्हाट डज दिस मीन नाउ? क्यों वो बताना चाह रहा है कि वो अफ्रीकन है, क्यों वो कह रहा है कि मुझे वेस्टेड जर्नी पसंद नहीं है? द पोएट टेल्स, अब हमें यहाँ पोएट वोल सोयंका क्या बता रहे हैं, दैट एन अफ्रीकन वांटेड अ हाउस ऑन रेंट. द अमाउंट और द रेंट वॉज रीजनेबल, अफोर्डेबल था रेंट भी, लोकेशन जो थी वो अवे थी फ्रॉम द पॉश क्राउडेड एरिया. लैंडलेडी भी जो थी, शी टू लिव्ड अवे फ्रॉम द प्रेमिसेस, वो बिल्डिंग से, अपार्टमेंट से काफ़ी दूर रहती है. Everything was fine for him, but he wanted to confess something. सब कुछ ठीक था लेकिन वो कुछ confess करना चाहता था. जो ब्लैक अफ्रीकन है जिसको घर चाहिए, वो कुछ confess करना चाहता है. He called up the landlady to settle down the matter. अब क्यों उसमें कॉल ही कर रहा है, वो कॉल करके वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन सेटल डाउन करना चाह रहा है. लेकिन he was aware of the racial bias around him. उसको पता है कि लोग बहुत ज़्यादा रंग को लेके, ब्लैक और वाइट को लेके भेदभाव करते हैं. तो ही वॉज नॉट श्योर ऑफ गेटिंग द अपार्टमेंट. उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये लेडी अगर इसको पता चलेगा कि मैं ब्लैक हूँ, मुझे घर नहीं देगी. सो ही वॉन्टेड टू बी ट्रू ऑन हिज पार्ट, वो अपने पार्ट पे बिल्कुल सही रहना चाहता था और इसलिए वो लेडी को वॉर्न करता है. therefore he warned the landlady
with the words I hate a wasted journey, I am African, कि मुझे जर्नी अपना सफ़र व्यर्थ गवाना अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ आई एम अफ्रीकन। अगर ये सुन के भी आप मुझे ऑफर दें मैं आपका के घर देख लूँ तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन वो बिल्कुल बिगिनिंग में ही ये बात बता देना चाहता है दैट आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूँ। साइलेंस, तो जब वो बताता है कि वो अफ्रीकन है देयर इज साइलेंस, silenced transmission, silenced transmission of pressurized good breeding voice when it came, lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder piped, caught I was foully, how dark, I had not misheard, are you light or very dark, button B, button A। तो यहाँ पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लेडी के लिए जब उसने सुना कि वो अफ्रीकन है तो देयर वाज अ साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस था, और अगर कुछ था तो बड़ा प्रेशराइज्ड, जैसे वो बड़ी ऊंची जात को बिलोंग करती है, वो वाइट होती है, और ही कुड इमेजिन, वो ये इमेजिन कर पाया जैसे एक लिपस्टिक कोटेड लिप्स के साथ उस लेडी के मुंह में एक सिगरेट का पाइप है, लाइक शी इज स्मोकिंग। तो एकदम से आवाज आती है, उसको लगा भी एक बार कि कहीं गलत तो नहीं मैंने सुन लिया कुछ, बट यस शी आस्क्ड हिम हाउ डार्क, कितने काले हो, मतलब कितना गहरा कलर है आपका स्किन का। सो ही टोल्ड हर that he did not want to waste his time. After hearing his confession, the landlady became silent. But still, there was some silenced transfer of feelings and imagination. तो ये भी कुछ सोच रहा है, वो भी कुछ सोच रही है, तो साइलेंस में भी कुछ कन्वे हो रहा है और वो फीलिंग्स कन्वे हो रही हैं, इमेजिनेशन कन्वे हो रही है। द स्पीकर इमेजिन दैट द लैंडलेडी वाज अ वाइट वुमन, तो इसने इमेजिन कर लिया कि वो जो लैंडलेडी है शी इज अ वाइट फीमेल, शी वाज अंडर द प्रेशर ऑफ गुड ब्रीडिंग, उसको अच्छी परवरिश मिली हुई है। He thought that her voice came out of her lipstick-coated lips and she was smoking a pipe. The landlady asked him about his color. How dark? Kitna gehra? Kitne kale? The speaker was shocked at this question. She repeated, Are you light or very dark? उसने फिर से पूछा. For the lady, this question was just like pressing the buttons. But for the speaker, it was a big insult or humiliation. तो लेडी के लिए तो एक आम क्वेश्चन था, जैसे बटन ए बटन बी प्रेस कर दिया कि काले या गोरे, तो ऐसे कर रही है वो। लेकिन इसके लिए एक अफ्रीकन के लिए जिसको घर रेंट पे चाहिए, उसके लिए दिस वाज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Stench of wretched breath of public hide and seek, red booth, red pillar box, red double-tired omnibus, squelching tar. It was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender. Pushed dumbfounded to beg simplification, considerate she was, wearing the emphasis, are you dark or very light? Revelation came. तो अब यहाँ क्या हो रहा है, वो लेडी क्या कह रही है, जैसे ही बिल्कुल साइलेंस हो गया, अब इसने अलग अलग तरीके से रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर, ये सब चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। एंड दिस रेड कलर जो वो बार बार मेंशन कर रहा है, इसका मतलब क्या था, दैट ही इज ट्राइंग टू शो हिज एंगर, कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये आप क्या पूछ रहे हो, यू आर इंसल्टिंग मी डायरेक्टली। तो इन यहाँ पे now it is very clear from this conversation between the caller and the landlady that the speaker was black African. हमें ये पता चल गया कि वो black African है, and the landlady was a fashionable white woman. She had that hatred against the blacks. The speaker is a victim of racial biasness, right? Racial bias का victim है ये speaker. In these lines, the poet tells us that the question of white landlady about his skin tone was like a bad breath.
तो जैसे मुंह से बदबू आती है, ऐसे लगा उसको वो क्वेश्चन, जैसे बास आई हो उसको कोई उस लेडी के मुंह से जो अपने आप को बहुत फैशनेबल बन रही थी उस टाइम. The speaker used the images of red booth, red pillar, red omnibus to show his anger. So specific emphasis on red. Then she became silent, but he thought it to be ill-mannered. तो बिल्कुल चुप हो गई, ये भी चुप हो गया ये कलर्स बता के. तो इसको लग रहा था कि दिस इज ill-mannered. I cannot be very silent like this. But yes, उसको बुरा लग रहा था कि instead of asking some other question, she has sticked to one question. एक ही question पकड़े हुए वो लेडी, कितने गोरे कितने काले, यही पूछी जा रही है. The lady asked him again the same question about his skin tone. She wanted to know whether he was very dark or light in complexion. कि बहुत ज़्यादा black है या कम black है, वो this was her main concern. He felt very bad. He did not want to talk to her, but definitely he had to talk because otherwise it would have been very rude on his part and this would have been an insult for a female. तो इसका मन नहीं था, फिर भी speaker बात कर रहा है. So let's see what comes next. You mean like plain chocolate or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. Rapidly, wavelength adjusted. I chose West African sepia. And as afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic flight of fancy, till truthfulness changed her accent, hard on the mouthpiece. What's that? Conceding. Don't know what that is. Like brunette? That's dark, isn't it? Not altogether. So here, that lady is making certain speculations. So, वो बार बार उसको पूछ रही है. Plain chocolate, milk chocolate. These are the different tones of brown and blacks. तो बार बार उसको पूछ रही है, जैसे डार्क चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा ब्राउन होती है, डार्क चॉकलेट, और वो ब्लैक टोन की तरफ थोड़ा ज़्यादा टिंच होता है, ब्लैकिशनेस उसमें ज़्यादा होती है. देन इफ़ यू हैव मिल्क चॉकलेट, दैट विल बी क्वाइट little lighter in shade. For example, I'm wearing these black and brown shades only. So this is the dark one and this is the light one. This would look like milk chocolate and this would look like the dark one, plain chocolate and milk chocolate. So different, coincidentally, I'm wearing all the chocolate shades only. So these are the questions, and her tone is not at all polite, and he's feeling, bad about it. When the wavelength adjusted, it means when they both, now they were silent and then they thought of talking to each other. So he asked her what was the meaning of a question. तो उसको पूछ रहा है कि क्या मतलब है आपके पूछने का, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे. She was talking in a rude way. The speaker decided to reply her. Then he told her that he was West African sepia, according to his passport. तो passport में उसके ये लिखा हुआ है that he belongs to this race. She did not know what that was. उसको नहीं पता था लेडी को ये क्या है. She wanted more clarity about his color. This shows that she was very poor in the knowledge of colors. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी चाह रही है उसके कलर के बारे में, और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उसमें सिर्फ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नॉलेज नहीं है. उसको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है, कौन से कलर की बात कर रहा है. Though she acted like a high society lady, but seems to be poor at knowledge of colors. तो बनती तो वो ऊंचे खानदान की है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ उसके नॉलेज जो है कलर्स की वो बहुत पुअर है. She knew only 2 colors. उसको सिर्फ 2 ही कलर्स पता हैं, dark and light, और one can say white and black. उसको ये पता है कि मैं white हूँ और मेरे सामने वाला शायद black है. इसके अलावा उस लेडी को और कलर वेरिएशंस नहीं पता. सो उस लेडी के लाइफ में सिर्फ 2 ही कलर्स हैं. Therefore, she wanted more clarity over the caller's response. और आगे से स्पीकर क्या उसको जवाब देते हैं that his color was like the hair of a brunette. तो उसको बताते हैं कि मेरे जो कलर है, मेरा स्किन टोन कॉम्प्लेक्शन है मेरा, वो ब्रुनेट जैसा है
उसके बालों जैसा है, तो आप गेस करो अब कैसा है. बट दैट लेडी इज रियली पुअर एट इट, और वो एंड में दोबारा से उसको वो ये पूछती है कि अगर इवन यू आर मेंशनिंग द कलर हेयर ऑफ अ ब्रूनेट, दैट्स डार्क इजंट इट. तो आगे से वो फिर से यही करती है कि वो तो डार्क होगा. नहीं, मतलब शी डज नॉट वांट टू एक्चुअली give her apartment on rent to a black anyhow. चाहे वो ज़्यादा काला है चाहे वो कम काला है, यहाँ से हमें यही पता चलता है she is not willing to. But now this man, African person, he already knew it कि उसको घर नहीं मिलने वाला. But अब उसको उस लेडी को जवाब भी तो देना है ना, ऐसे इंसल्ट करा के वो चुप नहीं रह सकता. तो let's see what he has to say now. So अब ब्लैक टेनेट जो है, जो ब्लैक कॉलर है, स्पीकर है, वो जवाब देगा. He's saying, facially I am brunette, but madam you should see the rest of me. तो कहता facially तो मैं ऐसा दिखता हूँ, but आपको मुझे खुद personally देखना होगा. The palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. तो मेरे हाथ, palm, और जो मेरे पैरों के सोल हैं, तो वो कैसे दिखते हैं? वो peroxide blonde दिखते हैं. Friction caused foolishly madam by sitting down has turned my bottom raven black. तो बैठ बैठ के मेरे बॉटम्स का कलर चेंज हो चुका है. One moment madam, sensing her receiver rearing on a thunderclap about my ears, madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? And here the poem ends. So now यहाँ पे आके इन लाइन्स में हमें पता चला कि ब्लैक टेनेट जो ब्लैक कॉलर है उसने भी अपना बदला ले लिया. उसने साफ साफ उसको कहा कि मेरा चेहरा इस कलर का है, मेरे पाम और मेरे सोल्स ऑफ फीट इस कलर के हैं, और बैठ बैठ के मेरे बॉटम्स जो हैं वो बहुत डार्क हो चुके हैं, और व्हाई डोंट यू कम योरसेल्फ टू सी मी, कि आप खुद ही आके मुझे क्यों नहीं देख लेते कि मैं कितना काला कितना गोरा हूँ. तो ये कह के इससे पहले कि लेडी जोर से फोन बैंग करती और इसकी इंसल्ट पहले होती, इसने ये बोल दिया कि उस लेडी को एहसास दिला दिया कि आप कितने गलत हो. हाउ कैन यू आस्क दीज क्वेश्चन टू समवन, दिस इज sheer insult. So in these lines, the black speaker in these lines try his best to explain the exact tone of his skin. वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी skin tone कैसी है. The speaker did not answer her directly, but he started describing the color of his body parts one by one. He did so to show his anger. क्यों कर रहा है वो ये सब? वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए कर रहा है, that how bad that lady is in her, you can say, in her behavior, that how could she ask somebody directly कि आप कितने गोरे या कितने काले हो. तो he is trying to just convey his anger in his own way. He told her that officially he looked like not officially, this is a mistake here. What should have been the word? Yes, instead of this, not officially, this should be the question for all the viewers, that what is the exact word to be used here. Okay, so this is the word I am leaving for you all to correct. You have to just tell me what is to be written instead of officially, right? So after watching the video, do write it into the comment box. So he told her that dash, right? I will not tell you the answer. He looked like a brunette, which means that the color of his face is brunette. He added that his hands and feet are peroxide blonde. He told her that by sitting down for long hours, his bottoms have turned the raven black. Again, this is not to be turned raven black. This is not to be included. The speaker was sure that he is irritating the lady and she would put the receiver down with a bang. So she would know what is to be right here. I have just spoken it.
I have just said what is to be added here, and the question is what she's going to do with the receiver. Here is a mistake. Do let me know in the comment box. Okay, but you should not be finding out so many mistakes. Let me just tell you, correct it. So he is fearing that she would put the receiver down. So instead of, I would let you know the correct one. So she would not go to, this would be, she would put, she would put the receiver down with a bang. अब उसको इतना पता चल गया कि ये लेडी क्या करने वाली है. But this officially you have to let me know in the comment section कि यहाँ क्या आना है. Just one word only. So now he knows that she would put the receiver down with a bang. So he hit the sixer in the last conversation, in the last dialogue. And what he did, he threw, और आप क्या कह सकते हो, he threw the last straw on the camel's back. उसने last पैंतरा छोड़ा है, अब sixer मारा है end में. What he said, by saying that she could come to see in person, वो आके खुद देख सकती है कि उसका कलर गोरा है या काला है. And that is how he takes his revenge on that landlady. And he shows his anger, right? तो ये कह के कि वो आके खुद देख सकती है कि कितना गोरा या कितना काला है, वो अपना बदला ले लेता है. यहाँ पे डिफरेंस आना है, ये एक साथ नहीं है. I'm really sorry. So this is, यहाँ स्पेस आनी है, CN, यहाँ स्पेस आएगी C और in के बीच में. So she could come and see in person the exact color of his skin. And that is all about the poem. So let's move on to the next slide and see what's there. Thank you very much for sparing your time. And one more thing, if you are watching this for the first time, don't forget to subscribe and do press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. So here is the man, here is the great bard whose poem we have just finished. And this is what I liked about him. He has given wonderful quotes to the world, and one is, under a dictatorship, a nation ceases to exist. This is what he says about slavery and dictatorship. कि अगर country में एक ही बंदा रूल कर रहा है without considering the rights of the people, dictatorship होती है वो, तो एक nation, एक country exist करना छोड़ देती है. All that remains is a fiefdom, a planet of slaves regimented by aliens from outer space. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ slaves रह जाते हैं और उनको कौन रूल करने आता है, somebody from the outer space. So we need to take care of all the citizens living in a country. If blacks are living with the whites, there shouldn't be any discrimination on the basis of color. We all are brothers and sisters. We all are sons and daughters of the same God. So हमें ये भेदभावों से बहुत ऊपर उठ के रहना है और एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करना है, so that this world should become a better place to live in. So with all those good things about the poet and about the poem, I'm taking leave of you. Thank you for watching. Stay safe and healthy, and keep learning till I upload the next video. Take care.